Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. So in the last video we have seen about the developer tool. We have manipulated our loader with the help of developer tool. Now in this video we are going to discuss about the CSS variable. So first of all, what is CSS variable? CSS variable are the variable which we can insert in our code, and mostly CSS variable are used for the designing purpose. Now the question is how we can declare the variable. So let's discuss. Let's move to on our VS Code. Now this is the loader which we have made. We have made the two loader, so this is one of them. Now what I want to do here is first I want कि यहाँ पे हमारा लोडिंग आ जाए, जैसे लिख के आता है लोडिंग, तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आ जाए। तो उसके थ्रू मैं आपको CSS वेरिएबल के बारे में बताऊँगा। तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे एक और डिव बनाऊँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा लोडर टेक्स्ट. Inside that I will write the loading. Then I want this type of content should be visible, but for these three dot I will use the span tag because I want to put the animation in that as well. So span dot 3, I will add the class here. So the class is dot 1. I will place the name dot 2 and it is dot 3. This is dot 3 dot, but this is not at all in the center. So for that I will provide the CSS. So I will write here loader. I will write the position as absolute. So it has been came in the mid. Now our h1 tag, I will give the font size as 20 pixel. Now as you can see the dot symbol, if I will show you, the dot symbol is here. So for that I will provide the display. So display is flex, that we will discuss later. Justify content center, align item center. Now it has been came in front of the loading. Now I want the animation in that. So मैं चाहता क्या हूँ कि जिस कलर का मेरा लोडर हो उसी कलर का मेरा लोडिंग और जो मेरा डॉटेड सिंबल है उनका भी कलर हो। तो पहले मैं आपको क्या दिखा दूंगा, चलो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया h1 एंड स्पैन टैग, मैंने इसका कलर दिया रेड, अब ये रेड भी हो गया। तो अगर मेरे को इसका बॉर्डर टॉप चेंज करना है, मैंने यहाँ पे जैसे बॉर्डर टॉप दिया हुआ है, बॉर्डर टॉप, अगर मेरे को इसको ब्लू चाहिए, मान लीजिए मेरे को कल को लगता है कि मेरे को ब्लू चेंज करना है, तो मेरे को यहाँ पे दो जगह चेंज करना होगा, एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। There are more than 2 numbers of places where the red color is present and I want to remove all of them and I want to put the blue. So this is very tough because I have to change at multiple places. So for that we have a CSS variable. What we can do, we can declare the CSS variable with the help of two ways, global and local. So first of all I will show you the global. So I will give the name. So I am giving the loader color. Here I color name, so assume I am giving the blue. Now this has been declared. अब मेरे को जहाँ जहाँ चाहिए तो मैं उसको वैर के अंदर लिखूंगा लोडर कलर, और मैं ये सेम चीज़ यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा वैर। अब आप देखो सेम आउटपुट हमको मिल रहा है, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका कलर हो जाए ऐसे। तो मैं जहाँ जहाँ चेंज करूँगा वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वी डू नॉट नीड टू चेंज एट एवरी प्लेस। Now I hope it is clear to you what is CSS variable. So let's put the animation on the dot symbol. So I will give the dot 1. So animation name, first I need animation name, so I am giving the name as dot. Now we have an animation duration 2 seconds, then animation timing function,
animation delay 0.5 second, animation iteration count infinite, animation infinite। अब मैं यहाँ पे अपना एनिमेशन डिफाइन करूँगा, की फ्रेम वी हैव अ डॉट, सो आई मीन डॉट। तो 0% पे क्या होना चाहिए, 0% पे ओपेसिटी शुड बी 0, और 100% पे क्या होनी चाहिए, ओपेसिटी शुड बी 100%। अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो आप देखो ये ब्लिंक कर रहा है। तो इन द सेम वे मैं दो और को भी एनिमेशन दे दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा .2, वी हैव अ .2 एंड .3। मैं यहाँ पे केवल एनिमेशन डिले चेंज करूंगा, दिस इज 1 सेकेंड एंड दिस इज 1.5 सेकेंड। लेट्स सी द आउटपुट। एज यू कैन सी this is working properly, and whenever I want to change the color, so I will change the color of a variable and it will make the changes accordingly. I hope we have seen 3 type of loader as well in this video. So we have seen the 3 type of loader and we have learned the CSS variable. I hope guys that is clear to you. Like, subscribe and comment. I will meet in the next video with the next video. Till then, bye bye, take care.